Good morning, students. In my earlier video, I have explained the first part of the poem, Father Returning Home. As I told you, in the poem there are two parts. One, the traveling of father, that is father's time spent outside. Now the second part begins from afterwards, where father has arrived at home, tired, perspired, and again how he is treated at home. ये सभी बातें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं. यहाँ पे वो कहते हैं, home again, I see him drinking with tea. अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन आया हुआ है, that is with tea. ये एक्सप्रेशन क्या चाहता था आपको? with tea. Actually tea is not with, okay? यहाँ पे ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है ये. with tea. With tea stand for the tea is actually not of good quality. The tea is having more water than needed, and so it is the weak tea. Okay, eating a stale chapati. Now again, that father, when he returns back to home, at that time the food that is given to him, that is a stale chapati that is given to him. Stale chapati. Okay, so जो चपाती सवेरे बनाई हुई है या फिर दोपहर में बनाई हुई है, वही चपाती फादर को खाने के लिए चाय के साथ में दी जाती है. तो इससे हमें पता चलता है कि the basic requirements of father, they are also not fulfilled properly. Okay, reading a book, and the only companion that father has, it is a book. फादर इज रीडिंग अ बुक. एक्चुअली क्या होता है कि जब फादर घर को आते हैं तो फादर घर को आने के बाद में वहां पे बच्चे जो रहते हैं उनके पास में जमा होते हैं, पूछते हैं कि हाउ वाज द डे, या फिर व्हाट डू यू ब्रिंग फॉर अस, वगैरह वगैरह. ऐसी चीजें होती है जब फादर घर को आते हैं. पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. नोबडी इज नोटिसिंग द प्रेजेंस ऑफ फादर. ओके, nobody is noticing the presence of father. Nobody is caring for him. He is giving the food that is stale type. And it talks about the importance that the father has in home. Okay, तो यही तो है एक बहुत ही ये एक misery, the plight, the pain, the sufferings, the alienation of father is explained here with this expression. Okay, so father reading a book, and then he goes into the toilet to contemplate. Then where he goes into the toilet. तो टॉयलेट में जाते हैं और वहां पे वो कंटेम्पलेट करते हैं. कंटेम्पलेट यानी टू थिंक ओवर. कंटेम्पलेट, that is to think over. वो ब्रूड करते हैं. He is making actually he is actually pondering. Okay, और then क्या होता है? Man's estrangement from a man-made world. Estrangement means here estrangement means here that is the alienation, that is a break from a world that is made by man. तो हमारी दुनिया जो है, हम उम्र में यंग है और साथ ही में एक तरह से बहुत सारी होप्स हमारी जुड़ी हुई है हमारे लाइफ के साथ में. हमारे कुछ ड्रीम्स है, हमारे एस्पायरेशंस है. इनकी वजह से वी आर वेरी होपफुल अबाउट अवर लाइफ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये सपना है. इस तरह से we have lots of dreams and aspirations, and so we are very much hopeful about our future. But father, when he comes back home, at that time there he has no aspiration, because he has now grown old and somewhat useless for his family. Father has been working hard for the family. He has been working hard throughout his life. Okay, he has devoted his whole life
for the benefit of his family, but what in return he gets? He gets nothing. Okay, and so father, he goes into the toilet and there he ponders, there he thinks. तो हमें एक फैमिली के बारे में यहाँ पे एक आइडिया आती है कि वो फैमिली जो है वो वेल बिल्ट नहीं है. There is no actually it is not a well knit family. Okay, a combined family नहीं है वो. तो यहाँ पे सब जो फैमिली मेंबर्स है वो अलग अलग जा रहे हैं यहाँ पे. Nobody is caring for the father particularly. Then coming out, he trembles at the sink. तो सिंक के पास में वो आते हैं, तो एक बेसिन के जैसा. तो वहां पे आने के बाद में वो उनके हाथ जो है they are shivering. Okay, why he is shivering? Because of old age. He has grown old. दिलीप चित्रे बहुत ही वर्साटाइल पोएट इसीलिए कहलाते हैं कि उनका जो डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही विविड है. क्लियर पिक्चर, इमेजरी हमारे सामने क्रिएट कर दी उन्होंने कि कैसे हालत हो चुकी है बूढ़े बाप की. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्लाइट्स आल्सो. सो ही इज थिंकिंग, ही इज सेइंग दैट व्हेन फादर कम्स आउट एट दैट टाइम ही इज शिवरिंग near the basin and the cold water running over his brown hands. His hands, they have grown dull, they have grown brown. तो brown जो skin उनकी हुई है, that is also a kind of experience that it talks about. Okay, the father has lot of experience of life, but when it comes to his family at that time he has zero importance. Yes, and so his hand trembles and the cold water that is running out over his brown hands, a few droplets cling to the graying hair on his wrists. Okay, तो few droplets जो है, कुछ drops of water जो है cling, that is remain attached to the graying hair. यानी उनके hair जो है वो भी अभी whitish हो गए हैं, grey color हो गए उनके hair का, on his wrist. ओके, तो उनके हाथ जो है वो हाथ के ऐसे जो हेयर जो है वो आल्सो ग्रे कलर दैट दे हैव टर्न इनटू. सो ही हैज ग्रोन ओल्ड. हिज sullen children, sullen दैट इज बैड टेम्पर्ड. उनके बच्चे जो है वो बैड टेम्पर्ड है, यानी कोऑपरेटिव नेचर में नहीं है. दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट, दे हैव एंगर फीलिंग. ओके, अगेन they have a kind of lack of concern about the father. They didn't care for their father, and in this way they don't feel worried about the father. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. उनके father जो है, father has refused to share. Father has refused to share. Actually, father was refused to share. What he was refused to share? The children, they were not sharing their secrets, their jokes. Okay, and they don't want, the children, they didn't want to share their feelings with them. They didn't want that father should mix with them, and so they refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep. Father, he will go now to sleep. अभी वो सोने के लिए जा रहे हैं. उनका दिन खत्म हो गया. दिन भर ऑफिस में वहां पे दौड़ धूप करो, काम करो, शाम को घर पे आओ और घर पे ऐसी कंडीशन कि nobody is caring for him, whether he is alive or dead, nobody is caring for him. Okay, he will go to sleep listening to the static on the radio. और वो उनके कान पे उनको he has actually no freedom to listen to the music. He has no right to entertain himself. इसलिए वो कुछ तो भी स्टैटिक साउंड, एक मोनोटोनस डल साउंड जो उनको, एक क्रैकिंग साउंड जो उनको सुनाई पड़ता है, इसलिए वो उसको सुनते रहते हैं. और फिर he would have a dream of his ancestors and grandchildren thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. और फिर उनको एक जैसे ड्रीम आता है, और ड्रीम में क्या सोचते हैं वो कि ही इज लाइक अ नोमैड.
Nomad means here the migrant. In his own house he has become a migrant. माइग्रेंट से कैसे बर्ता होता है? माइग्रेंट से जैसे अनफैमिलियर, अनफ्रेंडली बिहेवियर होता है, ऐसा ही बिहेवियर उनके साथ में भी हो रहा है। इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्चुअली फ्रॉम द फैमिली नोबडी इज केयरिंग फॉर हिम एंड ही हैज बिकम अ माइग्रेंट फॉर हिज ओन फैमिली एंड व्हाट इज डूइंग, एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। और जो एक नैरो पास से एक सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर रहे हैं, ऐसे उनकी लाइफ अभी बन चुकी है। तो लाइफ इज वेरी, हियर द पोएम इज वेरी sorrowful, it is very pitiable, okay, it really makes us feel wonder what is the treatment that our society is giving to the old age people. Okay, the old age people, they are not considered a part of the family, part of the society, and they have to go through many plights and sufferings. Okay, why? What is the crime that they have done? What is the wrong thing that they have done? They have grown old. Is it their mistake? Really, we people are treating them in such a way that is really unforgivable. And so poet has make us think over it. Okay, तो एक बार मैं पोएम को रिवाइज कर दूं कि पोएम में जो डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे वो फादर जो है इज गेटिंग बैक टू होम, उनके बाद में उनकी कंडीशन कैसी है, एकदम गुमसुम चुपचाप वो घर को आते हैं। घर पे आने के बाद में भी नोबडी केयर्स फॉर हिम, स्टेल फूड उनको खाने के लिए दिया जाता है, कैसे तो भी वो ट्रेम्बल कर रहे हैं और फिर उसके बाद में रात को सो जाते हैं। उनको खुद का एक फ्रीडम नहीं है, देयर इज नो राइट फॉर हिम, एंड दिस इज द पोएम फादर रिटर्निंग होम। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? सेंट्रल आइडिया, थीम वगैरह, टोन वगैरह जो है, इन बातों के बारे में हम जब अप्रिसिएशन करेंगे पोएम का उसमें पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में भी वहां पे हम स्टडी करेंगे। सो आई विल स्टॉप हियर, सी आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।